Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to talk about a very important Korean verb, ida. So, let's start. Now the first question that comes in our mind is, what is ida? So, the English translation of the verb ida is to be. Okay, English में to be verb जो है उसे कोरियन में क्या कहते हैं? ida. Now, what is the use of to be verb in English? It is used to describe something or someone. बहुत ही basic but very important. This verb is very important in English language also and in Korean also. Now, let's see how this to be verb is used in English. Okay, look at the first example. I am a girl. Now here am is a to be word. क्यों? Because I, the subject in the sentence, is describing herself. तो जब भी हम describe करते हैं we use to be word, and here the to be word that has been used is am. Okay, let's see another example. That person is a teacher. Now here we are describing a person who is a teacher. So which word will be the to be word in this sentence? Is. Next example, I am John. John is describing himself. So here am again a to be word. Let's see another example. That man was a doctor. Now here again we are describing a man who was a doctor. So was is a to be word. Next example, those men are American. Again, are is the to be word in this sentence. Why? Because it is describing a group of men who are American. So all these words, am, is, was, are, and all the other words like them, they represent the to be words. Okay, this is how the verb to be is used in sentences. Okay, और in words को क्या कहते हैं? To be words. Okay, so इन सभी words को कोरियन में सिर्फ एक word से represent किया जाता है, that is ita. Okay, ita represents all these to be words in Korean language. Now let's focus on how to use ida in Korean language. Now we already know that ida is a verb, but it differs from other verbs in many ways. Okay, इसीलिए हम separately ida को पढ़ते हैं, because ये एक ऐसा verb है जो दूसरे verb से बहुत differ करता है. Okay, now let's see how. We know how to use verb in a sentence क्योंकि हमने basic sentence structure जब पढ़ा था, so at that time we learned how to use verb in a sentence. तो उस वक्त sentence structure क्या पढ़ा था हमने? Subject, object, verb. This is the basic sentence structure if you want to include a verb in a sentence. But ida, although being a verb, it cannot act on an object. Okay? तो फिर ida का क्या रोल है एक sentence में, और ida को हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. ida is used to indicate the noun in a sentence. Okay, सेंटेंस में noun क्या है उसे कौन इंडिकेट करेगा? ida. तो जब भी हम ida को एक सेंटेंस में यूज करेंगे, then what should be our sentence structure? Let's see. First comes the subject. ये तो बेसिक है. सब्जेक्ट के साथ हम पार्टिकल अटैच करेंगे. वी ऑलरेडी नो आइदर यू कैन अटैच ईगा और इनन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट आफ्टर सब्जेक्ट कम्स नाउन, और नाउन से क्या अटैच होगा? ईदा. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ईदा इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द नाउन. जब भी ईदा नाउन से अटैच होगा तो उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. Okay, all right. Now let's see some example sentences to understand
how either is used in a sentence. Now, before we take a look at all these examples, I want to share with you this note that all these Korean sentences, they are not grammatically correct. Okay? क्योंकि इन सभी sentences में ईदा conjugated form में नहीं है और हमें पता है कि unconjugated form में जब भी verb use होता है तो वो sentence grammatically correct नहीं होता है. मैंने यहाँ पे conjugation नहीं किया क्योंकि अभी हमने ईदा का conjugation नहीं सीखा है. आप फोकस कीजिए केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे. ओके, जस्ट फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर टू सी हाउ ईदा इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज आई एम ए स्टूडेंट. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई. नाउन क्या है? स्टूडेंट. ओके, नाउ आई को कोरियन में कहने के दो तरीके हैं. इनफॉर्मल वर्जन इज ना एंड फॉर्मल वर्जन इज छ. क्योंकि अभी हम कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं तो यू कैन यूज आइदर वन ऑफ देम. यू कैन यूज ना और छ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो सब्जेक्ट इज आई. सब्जेक्ट के साथ पार्टिकल अटैच कर दिया नानन. नाउन क्या है? स्टूडेंट. स्टूडेंट को कोरियन में क्या कहते हैं? hakseing. So hakseing ida. See, there is no space between the noun and ida. 나는 학생이다. Okay, let's see the next example. I am a woman or girl. So here again I is the subject and woman or girl is the noun. तो यहाँ पे मैंने I का formal version use किया है छ. तो सेंटेंस क्या बनेगा? छनन 여자이다. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. I am John. Here again I is the subject, John is the noun. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, नाउन, ईदा. 저는 John이다. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. That man is a doctor. Now here that man, this is the subject in the sentence and doctor is the noun. Now again we don't know how to translate that in Korean language, तो अभी हम that को as it is ही लिखेंगे. We know how to translate man. Man is namja. So that namja는 subject and noun क्या है? doctor. Noun का Korean translation 의사. namja는 의사이다. Okay, next example. This is a book. Here this is the subject in the sentence and book is the noun. Now we don't know how to translate this in Korean language, तो हम अभी this को as it is ही लिखेंगे. book को क्या कहते हैं कोरियन में? छेक. So this छेकीता. subject, noun, ida. So these were some of the very basic sentences to see how ida is used in a sentence. Okay, again ये sentences grammatically correct नहीं है. अभी आप सिर्फ sentence structure पे focus कीजिए. जब हम conjugation सीखेंगे तो हम proper grammatically correct sentences जो होते हैं वो देखेंगे. Okay, now we already know that if you want to use a verb in a sentence then it must be conjugated from its dictionary form. तो इसीलिए हमें ईदा का conjugation भी करना सीखना होगा ताकि हम proper sentences बना सकें. Now the thing is that conjugation of ida is different than other verbs. Okay, I told you that the conjugation of verbs is very easy बिकॉज आपको सिर्फ एक सेट ऑफ रूल याद करना होता है और उसके बाद आप वो रूल हर वर्ब पे अप्लाई कर सकते हो कॉन्जुगेशन करते वक्त. ओके, बट इन केस ऑफ ईदा, ईदा के कॉन्जुगेशन रूल्स डिफरेंट हैं देन अदर वर्ब्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्जुगेशन ऑफ ईदा इन डिफरेंट honorific forms, that is casual, informal and formal, and in present, past and future tense also. Okay, हर टेंस के अंदर ईदा का कैजुअल, इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉन्जुगेशन क्या होता है वो हम करना सीखेंगे. ओके, बट
before we learn how to conjugate ida, we are going to learn how to say this and that in Korean language. Okay, so today we learned what is ida and how ida is used in a sentence. I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.